एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राची क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं bes-002 टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जो कि कोर्स है d.el.ed का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे ये बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट वेज थ्रू विच लर्नर लर्न। यूनिट 1 का क्वेश्चन, डिस्कस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस एंड देयर यूटिलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Discuss the influence of emotion and testing for effective learning. Unit 3. Explain the role of attitude and learning styles in learning. How is teaching learning significant in teaching learning process? Select a topic in your teaching subject and discuss the process of preparation of a low-cost teaching learning and its role in teaching this topic. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और bes-002 के बाद bes-004, 008 जितने भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एंड लर्निंग? डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ टीचर विद लर्निंग एंड लर्नर। यूनिट 1. Explain Piaget stages of cognitive development. How do their stages help teacher in the teaching learning process? Unit 2 का table 2.1. Next question is, what is motivation? Discuss various types of motivation along with the application in teaching and learning. Unit 3. Discuss various school related factors which influence learning. Learning environment has a significant role in learning. As a teacher, how will you create a conducive learning environment in your classroom? Unit 4. Explain the concept and nature of teaching. Discuss how can you facilitate the process of learning through classroom teaching. Unit 1 के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। Distinguish between psychological and socio-cultural factors influencing learning. Discuss with example how different socio-cultural factors influencing learning. List out difference between center teacher and लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के अंदर डिफरेंस बताना है। डिस्कस विद एग्जांपल एनी टू लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। व्हाट इज मल्टीग्रेड टीचिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस वेरियस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज यू कैन अडैप्ट फॉर मल्टीग्रेड टीचिंग। यूनिट 9 में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। सपोज यू आर आस्क्ड बाय द हेडमास्टर टू प्रिपेयर एन अचीवमेंट टेस्ट इन द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन. Describe the steps which you would follow while preparing the achievement test. Explain the concept of learning. Differentiate behavioralist perspective from constructivist perspective on learning with suitable example. Again, next question is, what are the components of school environment? How will you create a conducive learning environment for your studies? Unit 4, page number 79 पे आंसर आपको मिल जाएगा। Explain the concept of assessment. Assessment के concept बताने हैं और वेरियस स्टेप बताने हैं असेसमेंट किस किस तरीके से होते हैं। व्हाट इज मीन बाय ICT? हाउ डज ICT हेल्प अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? डिस्कस लर्निंग एज अ प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। एज अ टीचर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ योर स्टूडेंट्स. इलैबोरेट दीज फैक्टर्स. हाउ डिड यू डील विद दोज फैक्टर्स? Next question is, discuss the barriers in inclusion of children with special need in a classroom. As a teacher, how can you make your classroom inclusive? Describe theory of psychosocial development by Erikson and discuss its implication for understand social development of children. Discuss the issues of children living in difficult context. As a teacher, how would you facilitate such children? Gender is a social constructions. Justify the statement with the help of an example. Discuss with example how observation could be used as a tool to understand children engagement in a classroom. ये 600 वर्ड क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट पार्ट इज 150 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे इस वीडियो में है। एक्सप्लेन एज टू हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेटेड एजुकेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? What do you understand about the social network in the classroom? Elaborate. How did region, religion, and caste contribute to culture and ethos of a family? Elaborate on the debates about development. Classroom activities involving participation of children. Formal and informal learning environment, scientific invention methods.
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स यूनिट 8 में, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बताना है प्रायरी नॉलेज में और पोस्टीरियर नॉलेज में विद एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेन हाउ कैन यू यूज़ क्वेश्चन आंसर मेथड इफेक्टिवली इन क्लासरूम टीचिंग, हम क्वेश्चन आंसर मेथड कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के अंदर, व्हाट इज मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउ कैन यू हेल्प स्टूडेंट्स विद द लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट इज इंटरनेट, हाउ कैन यू यूज़ फॉर टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल, इंटरनेट को हम एलिमेंट्री लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस पूछा गया है इनकल्ट्रेशन एंड एक्यूलरेशन में, यूनिट 2 पेज नंबर 45, एक्सप्लेन हाउ कैन यू इंश्योर गुड साइकोलॉजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास, यूनिट 3, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एज सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यूनिट 5, explain how assessment in scholastic areas is different from assessment in co-scholastic areas, what are open educational system OERS, school customs and traditions as a source of acquiring knowledge, difference between teacher centered method with learner centered methods, differences काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, brainstorming and role of teachers in it, steps of preparing a lesson plan, unit 8, formative and summative assessment, preparation of good achievement test, role of teachers and question answer method। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं d.el.ed कोर्स से रिलेटेड। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।